Hello everyone, welcome back to our channel, that is Economic Decode, and today we are going to talk about a topic which is quasi rent, right? You can call it as a quasi, it is okay. So quasi rent, which is a most requested topic and which is most demanded and which is most asked topic in examination, right? So quasi rent kya hai and how we can easily understand the meaning of quasi rent, right? So first we will see the topic, which is again developed and designed by Professor Alfred Marshall. So who designed this topic? Who developed this particular topic of quasi rent? We know the normal rent, which is we are paying to our land, our factory, our house, right? But quasi rent hai kya? So Professor Alfred Marshall, he designed the concept of quasi rent. So how he designed and how he developed this particular concept, there are two factors that he explained. First, that is a totally fixed factor and total variable factor. In production function, totally fixed factors, right? Production अगर कोई company करती है, manufacturer का है, then what are the fixed factor which is fixed, which is not changeable? Fixed, that means your land, your building, these are your fixed factor. Variable, that means what is the meaning of variable? It is changeable, right? It can be changed. Your raw material cost can be changed, your labor can change anytime, maybe they are on strike, your wages are changes every year, right? So that is a variable factor. So Alfred Marshall defined this concept into two parts: total fixed factor, total variable factor. In total fixed factor, rent factor is involved. As I said earlier, that land and building, you have to pay a rent. If you are a factory owner, if you are running your business, if you are manufacturing something, obviously you own your factory, or else you are taking on rent basis your factory, right? So rent is involved. Rent is a fixed factor. Now what is it there in variable में क्या आता है? Cost factor, right? Because we are paying cost, we are paying money, right? Variable, again your interest is also part of the cost factor. When we take capital is also variable. It can be changed anytime, and the manufacturer, the factory, the company has to pay the cost, that is again which is variable. Interest same होता है क्या every year? No, which is changeable as per the percentage, right? If I want to run my business, right, if I take loan, if I take capital for my business, then again cost I am going to pay. If I hire a labor, right, I have to pay wages, I have to pay salary, right? So that is again the cost factor. Third point क्या है? It is for the short period of time. Short period of time, why? Because if you are taking any piece of land, any area, any shop for a rent, the time period which is 11 months, right? So it is a shorter period of time. Every year you have to renew that particular agreement, or else you have to change. So ये क्या होता है? Shorter period of time के लिए. But if you are taking capital, right, to the bank, if you are taking capital from the bank and if you are paying interest, so it is for the longer period of time. Capital 1-2 साल का भी होता है, and again 30 years, 40 years, 10 years, 5 years का भी होता है. So that it is for the longer period of time. Wages, if you are hiring employee, आप employee को 1-2 महीने की salary देते हो क्या? No, we are paying. अगर employee काम करता है 15-20 साल तक भी, still we have to pay salary for the longer period of time, right? So that is a long term period of time. Next क्या है? Short period of time में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो हम रेंट प्रोवाइड करते हैं. सो एल्फ्रेड मार्शल ने क्या डिफाइन किया है? जो रेंट आप शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वासी रेंट. आई विल अगेन गिव यू दिस एग्जांपल एंड आई विल एक्सप्लेन, राइट? बट दिस इज जस्ट अ मीनिंग, राइट, कि किस तरह से डिफाइन किया जाता है. और जो रेंट या जो कॉस्ट आप पे करते हो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसे नॉर्मल रेंट कहा जाता है, राइट? सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि एल्फ्रेड मार्शल ने किस तरह से डिफाइन किया था क्वासी रेंट. क्वासी रेंट, ऑलवेज रिमेंबर, टोटली फिक्स फैक्टर पे होता है. लैंड, बिल्डिंग, दैट इज योर फिक्स फैक्टर. वी पे रेंट इफ इट इज ऑन रेंट बेसिस, राइट? शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और जो कम टाइम के लिए दिया जाता है उसे क्वासी रेंट कहता है, राइट? टोटल वेरिएबल फैक्टर में जो कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो हम वेजेस देते हैं या फिर हम जो टैक्स पे करते हैं, वट एवर इट इज अ नॉर्मल रेंट. Now I will give you the example so that you can understand very easily.
रेंट ऑफ हाउस इज ₹500. सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने एक हाउस परचेज किया है, उसका रेंट कितना आता है 500. डिमांड उसकी इंक्रीज होती है, राइट. उस एरिया में जो है वैल्यूएशन ज्यादा होती है, वो एरिया में एप्रिसिएशन होता है, राइट. एंड योर डिमांड इज स्टार्टेड इंक्रीजिंग बट योर सप्लाईज रिमेन सेम, राइट. आप जो 1 BHK के फ्लैट में है, सो उसी की पर्टिकुलर रेंट जो है 500 है, उसकी डिमांड ज्यादा है बट उसका सप्लाई रिमेन है. 1 BHK का आप 2 BHK तो नहीं हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, राइट. 1 BHK में 3 रूम्स आते हैं तो उसके ऑटोमेटिकली 4 या 5 रूम्स में नहीं कन्वर्ट होता है, राइट. तो सप्लाई जो है 1 BHK का अगर 500 स्क्वायर फीट का आपका फ्लैट है, देन इट इज अगेन रिमेन द सेम 500 स्क्वायर फीट ओनली, right. So your demand, the demand of your flat is keep increasing but your supplies remain same. So in that particular condition, demand keep increasing and your rent is also, your rent owner, your the house owner, they increase your rent up to 300. पहले कितना था 500, अभी कितना इंक्रीज हुआ है डिमांड की वजह से 300, राइट. सो आपको जो है टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करना है 5 + 3 8. सो 800 माइनस अगर आप एक्चुअल पहले कितना रेंट था वो माइनस करते हो, सो 300 विल बिकम योर क्वाजी रेंट. समझ में आया? इट इज अ वेरी easiest way that you can understand कि previously the demand, the rent for the flat, rent for your house is 500. Your house owner increase the price up to 300, राइट. 500 था, फिर 300 और रेंट बढ़ा दिया, राइट. टोटल कितना हुआ मंथली, देन यू हैव टू पे 800. 800 में से अगर आप एक्चुअल रेंट माइनस करते हो, सो 300 दैट इज योर क्वाजी रेंट. इट इज वेरी इजिएस्ट वे यू कैन अंडरस्टैंड. सो टुमारो यू कैन वॉच द वीडियो. आई विल एक्सप्लेन इन डायग्राम ऑल्सो graphically how the quasi rent is derived from Alfred Marshall. So hope you like this video, and if you want any topic to be explained, please comment down below. Thank you so much for watching Economic Decode.